Basically, for any execution of a construction project, I am showing some of the drawings, and you may be familiar with all these drawings. So, for a bridge, minimum these drawings are required, like alignment, design report, L section, LWR plans, design basis report for important bridges, GAD of important bridges, GAD of major and minor bridges, affecting, non-affecting of the existing bridges, TAD, temporary structural of minor bridges, GAD of ROP, RUB, structural drawing of ROBs, RUBs, then GADs of FOBs, structural lines of FOBs, schematic yard plans, ESP, engineering scale plan of yards, SIPs of signaling, RRs, RCCs, route control chart, cable route plan, building plans, drainage plan, protection work, design and drawings, etc. लिस्ट अभी भी समाप्त नहीं हुई है. सो एनी प्रोजेक्ट जब आप लोग मोस्टली कंस्ट्रक्शन से हैं तो ये ड्राइंगों से आप हमेशा फेमिलियर होते हैं. तो ड्राइंग बनाने के बाद, अप्रूव करने के बाद, फिर इसका कुछ रोल होता है इस ड्राइंग का. अप्रूव कराने के बाद फिर क्या करना है? फिर इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाते हैं सर. स्ट्रक्चरल ड्राइंग बन गई, फिर क्या करना है? फील्ड में इसका लेआउट करते हैं सर. ओके, गुड. तो लेआउट हम ड्राइंग देख के करते हैं, है ना? यस सर. एग्जीक्यूशन भी ड्राइंग को देख के करते हैं. यस सर. करेक्ट. कई बार ऐसा हो जाता है ड्राइंग में और एग्जीक्यूशन में बहुत डेविएशन हो जाता है, डिफरेंस होता है सर, है ना? यस सर. उसके कई कारण हो जाते हैं. कई बार हमारे फील्ड वाले ड्राइंग को ढंग से पढ़ते नहीं है. सो इसीलिए मैंने बोला अंडरस्टैंडिंग ब्रिज ड्राइंग्स, है ना? दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस टॉपिक कि हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द ब्रिज ड्राइंग को हम कैसे समझें, है ना? सो प्लानिंग ऑफ ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिजेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले वी डिड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आवर मेजर, माइनर और इम्पोर्टेंट ब्रिजेस. इम्पोर्टेंट ब्रिजेस का आपने देखा होगा कि मोस्टली इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करना है. हमारे ब्रिज मैनुअल में काफी कुछ डिटेल दिया है. टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबल स्टडी, survey of rivers in connection with the location of important bridges, then hydrological investigation, plan and cross section of rivers, factor governing to the choice of site, then design discharge for foundation, design of waterways, vertical clearance and freeboard, standard of substructure for new railway lines, final project report in case of important bridges, choice of foundation for bridges, then approval of drawing for new lines, doubling and gauge conversion. तो नॉर्मली ब्रिज मैनुअल में जो स्टेप्स दिए हैं उसके हिसाब से मैंने लिए. इतने स्टेप्स किसी भी ब्रिज की प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं. करेक्ट. सो नाउ we should come to the point of GAD. What is General Arrangement Drawing of a Bridge? What does GAD means? The arrangement. The arrangement showing the site of bridge construction, supporting of protection work, trading works, and other allied apparatus work also. Very good. Respect to reduced levels and alignment. Very nice. Very kind. So these all details comes under GAD. Means with the help of that data, we should able to construct our bridge. So रेलवे बोर्ड ने 2/11/2017 का एक लेटर है, चेकलिस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ GAD ऑफ रेलवे ब्रिजेस. मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस में सीबी ऑफिस में जब आप ड्राइंग सबमिट करते हैं तो इसी चेकलिस्ट के को भर के आपको मांगते हैं कि आप इसको इस चेकलिस्ट के साथ में ड्राइंग सबमिट करें. कुछ रेलवे में प्रैक्टिस है, कुछ रेलवे में नहीं है. तो इट विल बी ए गुड प्रैक्टिस इफ यू check your drawing with that checklist
और उसी के हिसाब से आप उस ड्राइंग को सबमिट करेंगे तो सारे डाटा उसमें आ जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी। आप लोगों ने देखा है वो लेटर? कंस्ट्रक्शन वाले, आप हैव यू नो अबाउट दिस लेटर? देखा है सर, देखा है ना? इसमें उसी लेटर को ही डिटेल में आपको समझाने वाला। बेसिकली अगर आपने उस लेटर को ही डिटेल में देख लिया तो आप ब्रिज की ड्राइंग को अच्छे से समझ सकेंगे, है ना? तो ये देखिए उसमें नॉर्मली क्या क्या रहते हैं कि आपके जर्नल डिटेल्स उसमें लिखे हैं, है ना? क्या क्या जर्नल डिटेल्स हैं, ड्राइंग नंबर्स हैं, स्केल है, नेम एंड सिग्नेचर है, रेफरेंसेस है ना? तो आपका नेम मोस्टली राइट कॉर्नर में आपका नेम, रेलवे डिवीजन, प्रोजेक्ट, वर्क लोकेशन, नेम ऑफ कंसल्टेंट, ड्राइंग का नंबर। तो नॉर्मली जो आपका सीओ ऑफिस में है, सीओ ऑफिस का टैग नंबर दिया जाता है। इसके बाद में फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी, अगर ब्रिज का फाइनल, हु इज द फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी ऑफ ब्रिज ड्राइंग्स? सीबी। एंड सम ऑफ द ड्राइंग्स कंस्ट्रक्शन को पावर चीफ इंजीनियर को दी हुई है। यस सर। किनको करते हैं हम? सीबी को कौन सी ड्राइंग नहीं भेजते हैं सीबी के पास? जो एग्जिस्टिंग ट्रैक से रिलेटेड नहीं हो। यस, एग्जिस्टिंग से अगर हमारा रिलेटेड नहीं है तो हम उसको सीबी के पास नहीं भेजते हैं, मेजर एंड माइनर ब्रिजेस। बट इम्पोर्टेंट ब्रिजेस को हमें वहां भी भेजना है। इवन कई बार हमें इम्पोर्टेंट ब्रिजेस यूज टू सबमिट टू द रेलवे बोर्ड एंड आरडीएस। यस, है ना? So the name and signature of the all officials involved in preparation of GAD, है ना, to be written clearly on, to be signed with the date for construction organization work, है ना, division officers and name and signature and headquarters के। Then references में आपको राइट कॉर्नर में पिंक बुक आइटम नंबर, जो आपका वर्क सेंक्शन है, व्हाटएवर भी जो आपका आइटम है, जिसमें भी पिंक बुक, ग्रीन बुक, जिसमें भी आपका वर्क सेंक्शन हो, तो उसका आपको नंबर देना है विद द नेम ऑफ सेंक्शन वर्क टू बी मेंशन क्लियरली। देन जो ड्राइंग नंबर में है उसमें अल्टरेशन है, अगर आपने कराया दोबारा तो उसमें अल्टरेशन नंबर विद अल्टरेशन टेबल यू हैव टू बी मेंशन। बेसिकली दीज पॉइंट्स जो भी मैं ले रहा हूँ, जो चेकलिस्ट के ही पॉइंट ले रहा हूँ, है ना, तो उससे आपको एकदम क्लियर आ जाएगा। देन डायमेंशन, उसमें आपको नोट्स में डालना है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, है ना, और उसमें क्या क्या है, जो व्हाटएवर भी डायमेंशन, स्केल एक्सेट्रा टू बी मेंशन। कलर पैटर्न है एग्जिस्टिंग, प्रपोज्ड, और कलर पैटर्न हमारे किस कोड मैनुअल में लिखा है? एनीबॉडी कैन टेल? इंजीनियरिंग कोड सर? नहीं, हमारे वर्क्स मैनुअल में कलर पैटर्न लिखा है कि हमें कौन कौन से कलर यूज करना है, किस उसमें क्या क्या करना है ना? आगे है मेरे पास किस कोड में क्या क्या लिखा है, ठीक है? नेक्स्ट, स्केलिंग एंड डायरेक्शन, स्केल टू द स्केल, नॉट टू स्केल, जो भी आपका टू द स्केल है ना, डायमेंशंस वगैरह सब लिखना है, स्केल, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, सबका व्हाटएवर भी स्केल यू आर मेकिंग फॉर दैट। इवन स्केल का भी डिफाइन किया है कि कौन सा स्केल में आपको क्या क्या बनाना है, प्रेफरेबली, क्योंकि कभी कभी जैसे इंपॉर्टेंट ब्रिजेस है, बड़े ब्रिजेस हो गए या छोटा ब्रिजेस हो गया, तो स्केल हमारे कई बार डेविएट हो गए, तो इसलिए ब्रिजेस में हम एक स्टैंडर्ड स्केल रख पाना कई बार बहुत प्रॉब्लम मुश्किल है। इसके लिए हम नॉर्मली स्केल में समटाइम्स माइनर ब्रिज और मेजर ब्रिज का तो कर लेते हैं, बस इंपॉर्टेंट ब्रिजेस के अलग अलग स्केल में हम करके बनाते हैं। डायरेक्शन टू द फील्ड इंजीनियर, देन डिटेल अबाउट द बिफोर एग्जीक्यूशन जो मेंशन करते हैं, फील्ड इंजीनियर टू बी डू दिस लाइक दैट, है ना, वेरिफिकेशन ऑफ लेवल्स, रेल लेवल फॉर्मेशन एक्सेट्रा, व्हाटएवर भी वेरिफिकेशन, क्लियर डायरेक्शंस वेयर द डैमेज और नियर बाय स्ट्रक्चर्स का डिटेल्स। देन कोऑर्डिनेशन, है ना, clear to executive department to consult, intimate and all like S&T and coordination instructions, all other departments used to write before starting the work to concern SI या जो भी है उनसे
you consider that for that the cable marking and all that details, so that will not infringe. Then traffic diversion, अगर हमारा कोई भी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं कुछ भी है. Then speed restriction clearly mentioned on the drawing about the speed restriction. And the references drawing. This drawing has been taken and GAD में normally reference drawing कौन सी होंगी? एक तो हमारी डिटेल डिजाइन ड्राइंग, जिनके बेसिस पे हम डिटेल डिजाइन बनाते हैं. References drawing. उनका परसेंटेज वैसे डिस्कस करना पड़ेगा तुम्हें. So speed restriction, reference drawing, etc. Then miscellaneous details like reinforcement, skin reinforcement, or other notes regarding no plastering, cement wash, dry stone, trolley refuel, OHE mass, safety measure, cable detail, etc. to be mentioned. Then in notes we will give regarding the code and specification, etc. about them. Then we will give the technical details like latitude, longitude, track, single, double, track detail, upline, downline, rail level, formation level, standard of loadings, and a type of superstructure, substructure, bearing, and then our hydrological detail, all whatever we have calculated like design discharge, catchment area, subzone, waterway, then waterway calculation, seismic zone, those all details has to be mentioned in in a hydrological column. Then seismic zone, exposure condition, etc. Provision of guardrail. If this the track is on straight or on curve, railway affected tank or railway affecting work within 50 kilometer में जो भी है, we have to be mentioned in drawing whatever be name of the river, stream, and flow directions, all reduced level with reference to MSL, or with we can write normally in new drawings, new construction project, we used to write in GAD through MSL, and in case of open line, if we don't have the MSL, then what we should do write? What is the practice? RL लिखने का. हम ब्रिज के RL कैसे लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या MSL से लिखते हैं कि रेफरेंस लेवल लेते हैं? MSL या तो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में हमारे पास MSL होते हैं, बट ओपन लाइन में मेनी टाइम्स वी डजंट हैव द MSL, और या MSL का चूंकि कंस्ट्रक्शन में हमारा एल सेक्शन से कनेक्टेड रहता है, बट इन ओपन लाइन जैसे हम एक आध दो ब्रिज रिबिल्ड कर रहे हैं, तो दे आर द आइसोलेटेड, they are not connected with the rail level. In that case, we can take the reference of usually downline center rail level will take considered as 100, and then accordingly we decided other level. So reference level hai, it is very useful. So like our rail level is 100, formation level is whatever. So you will direct okay, our rail level to formation level so much height. HFL rail level से इतना नीचे है. So normally in case of open line, there is a practice of writing assuming the rail level as 100 of downline. Correct? Otherwise in construction, chunki we are having all level of L section, etc. So that it's directly connected with the MSL. Then detail of existing bridges. So detail of existing rail bridges, road bridges, or written in tabular form. All details mostly whenever we are constructing existing bridge and proposed bridge. In that table, both data we are writing. Existing bridge number, location, span. I will show you the one of the drawings where how these are the incorporated. So that will be very much clear to you.
But just I will list out first, then I will show you the drawing. Then type of substructure, foundation, distance from existing bridge, rail level, formation level, foundation level, etc. Waterway and critical levels. Any major incident happened to this bridge in past, etc. That also to be considered in our. Next, the most important things is to write a board log detail or trial plot detail, means soil property details. So all bridge GAD, any bridge GAD without soil detail should not be submitted for the approval. Anyone can give example without any GAD, bridge GAD can be prepared without board log? No, sir. Any open line person? No, sir. Even for the regarding work, usually when I was DPC design, usually from division says for regarding work, why you want our foundation detail or board log detail? For regarding GAD, should we write? Why it is required? In case of rebuilding or new construction, it is okay because of all foundation detail. We are doing the only work on superstructure. Then why design officer asked about the founding level or your foundation detail and board log details of the site, SBC of the site, board log, why they asked? The bearing capacity of the soil where we going to transfer the logo transstructure. Correct. Very correct. That I want to listen from you, because if you are doing from any steel girder to PSC slab, so that bed will be changed. Changing load. Second, whatever the existing structure is, you are making. Suppose earlier it was the BGML standard. Now you are constructing for which standard you have to be construct minimum now? 25 ton load. 25 ton loading. So for 25 ton loading, if we are constructing, that you are writing the standard of loadings. Yes. Normally standard of loading, both we should, it means substructure and superstructure. If it is not clear, so you have to be write differently. Standard of loading substructure is so much 25 ton, superstructure 25 ton. If you are not able to, if you found the substructure is not fit for 25 ton, then either you have to be strengthen it. Yes. Or sometimes most of the 80% cases, if we have the foundation detail and SBC of the area, yes, the design office itself can calculate and give you the detail of about the your structure is safe for 25 ton loading. So then they directly they will write substructure and superstructure is fit for 25 ton loading. As earlier I have told, we have to mention the loading also. Yes. So with this exercise, we can certify our bridge about the latest loading and we can check for that. So whenever we are going to do the exercise of making GAD, please do this exercise also, whether our bridge is safe for which standard, either 25 ton or existing other loadings also. This is also our main important duty. So that whatever we bridge work we are doing, we should be updated as per the latest standards. For that, our this trial pit details, our board log details are required. Where we will take trial pit and where we will take board log. What is the difference in trial pit and board log? For open foundation, we can take trial pit. Correct. And board log? To assessment underground under soil Foundation.
Yeah. So whenever we are doing any deep construction, deep foundations, then tile pit is not possible. Whenever we are doing any shallow foundation, then we can do our, like agar box, we are providing a box, etc. So we will can assess and we have the history of that area and where is the our depth level, etc. Then we can decide, okay, this will be our strata. So for that we can go for the tile pit. But bore log detail should be taken whenever we are going deep foundation. Even the shallow foundation also we should consider the bore log detail, because it will give the data. If we take the trial pit, up to which depth we should do the bore log or trial pit. If we have to be rest our foundation at suppose 3 meter from ground level. So how much deep you will go for the trial pit? 2 to 3 meters. Up to 2 meters. You have to be go from ground level to 3 meter, तो आपको फाउंडिंग लेवल लेना ही है, आपको चाहिए. तो फिर फर्दर और कितना आप जाएंगे उसके नीचे? Sir, up to 2 times width of foundation. Yes, actually this is the जो हमारा बल्ब बनता है, जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन है, उस बल्ब को कंप्लीट करने के लिए हमें नीचे तक जाना होता है. दूसरा क्या है कि हम फाउंडेशन, हम अगर ओपन फाउंडेशन अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि हमारी एसबीसी उतना प्रॉपर है कि नहीं है. अगर हमारा वो हमें कॉन्फिडेंट है कि हमारा इस स्टेटा के नीचे भी वही स्टेटा है, स्टेटा इज नॉट बीइंग चेंज, एसबीसी अगर मुझे अभी 20 मिल रही है तो नीचे हमारी एसबीसी कम नहीं होने वाली, एसबीसी बढ़ने वाली है, देन एटलीस्ट हम विड्थ ऑफ फाउंडेशन तक जाने के बाद टर्मिनेट कर सकते हैं. इवन देन अगर हमें डाउट है कि नीचे हमारा स्टेटा और खराब हो सकता है, तो जहां तक हमारा स्टेटा खराब होता है वहां तक हमें जाना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वी शुड नॉट गो फॉर द बोर लॉग. सबसे बेस्ट तरीका है ताकि हम बोर लॉग को हमेशा, इवन हार्ड रॉक में भी फॉर इम्पोर्टेंट ब्रिजेस वी गो टू द पेनिट्रेट इन हार्ड रॉक में भी हम उसका नीचे तक और भी ज्यादा नीचे तक जाते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू स्लिप सर्किल एक्सेट्रा फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ दैट important and major bridges. So this is the our basic interpretation. So mainly, and second सबसे most important that I want to tell you, bore log and trial bed detail में main important things we should mention the location with chainage, reduced level at top of the trial bed, and bore log, SBC value of each strata to be shown in the tabular form. इतना डिटेल हमें देना चाहिए. आप बोर लॉग की लोकेशन कौन सी ड्राइंग में दिखाते हैं? जीएडी में बोर लॉग की लोकेशन कहां दिखाएंगे? बोर लॉग का तो आपने एलिवेशन दिखा दिया, जो 2 मैंने चार्ट दिखाए आपको, ठीक है, बट लोकेशन आप कहां दिखाएंगे? नियर फाउंडेशन, पियर. नहीं, उसमें उस ड्राइंग को क्या बोलते हैं? जहां आपने बोर लॉग कौन सी लोकेशन पे लिया वो आपको दिखाना है, उस ड्राइंग को क्या बोलते हैं? जीएडी के अंदर बहुत सारी ड्राइंग होती है, लाइक प्लान, एलिवेशन, की प्लान, सेक्शन, करेक्ट? तो उसमें कौन सी ड्राइंग होती है जिसमें हम बोर लॉग की लोकेशन दिखाते हैं? प्लान में दिखाएंगे. Anyone other? की प्लान. वेरी करेक्ट. की प्लान से हमें दिखाना चाहिए, और की प्लान में हमें उस लोकेशन को अबटमेंट और रेलवे ट्रैक से डिस्टेंस दिखाना चाहिए कि ये लोकेशन पे मैंने लिया है, अबटमेंट से 10 मीटर और रेलवे ट्रैक से हमारा 20 मीटर या जो भी है x मीटर, और उससे y मीटर पे हमारा ये लोकेशन है. So that we will be sure. And second, level is very much important. Many time I have noticed in the design office when the drawings comes to me for the approval,
they have not mentioned the ground level. Like this level, whatever we are showing, they are not mentioning this triangle, ground level. See, this ground level they have not mentioned. What will happen if you will not know the ground level and you have the data, then what will happen if you don't have the ground level? Anybody, please? If you not mention the ground level in board log, so what will be the repercussion? Sir, we will not know the exact position what soil strata coming to ground below the ground. Correct. Actually, where he has taken the instrument, what level he has taken, with this only ground level, we will be able to know the level of this strata. This strata level we will able to know only with the help of this ground level. Yes, sir. If we don't know this level, then how we will calculate this strata? That's why this level is very much important. If we not write this strata, we don't know where they have taken. So this hard rock hard is coming at how much level depth, where our foundation is standing. If we are not having this strata, then we will not be able to correlate our founding level. So this value is the very much important. And आपकी ही ड्राइंग पे देख लीजिए कितनी ड्राइंगों में आपने मेंशन किया है कि नहीं किया है. बहुत ज्यादा मैं बोलने के बावजूद भी many times I have written and this mistake is usually being done. Second, आपका ये पैटर्न है जैसा कि आपको दिखाया, लेवल के बाद उसका कितना थिक पैटर्न है. Then we have to be mention about the soil details. Which type of material is there? SM, ML, SM, etc. These all details, which should be as per the soil classification IS 1498. 1498. For soil classification, this is the IS classification 1498. For soil classification, this is the chart. There they write GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM. If it is not written like that, I used to return the drawing. I don't want highly weathered, yellow, reddish, weathered soil, clay, silt. This is not the engineering definition. You should write GW, GP, ML, CL, whatever be our property of that. So whenever you are doing, normally in railways or construction or open line, you are taking the soil exploration from a geo consultant. So usually geo consultant, many times if you ask, they will give as per 1498, but sometimes they will get very random. I am seeing that not a properly classified. It has to be classified as per this terminology. Yet you will see that he is writing here. You will see there here, yellowish, brown, fine or very fine, grained, sandy, clay or low plasticity with little to some gravels. Bracket में he is written CL. Means CL को और classify कर दिया. But he is saying yes, this is CL soil, this is CL soil, this is CI soil. Is that clear? Any doubt? So for that you should know about the classification details. Some of the data I am kept here. Otherwise you should read 1498 in details. These are the suffix of that. In this slide I have provided the suffix, which is gravel, sand, silt, clay, how it is defined, organic, peat, then it is suffix and prefix. Both are the suffix में well graded, poorly graded, silty, clay, these mentioned. Then this classification has been given. So are you, when you are making any GAD, are you seeing this classification is there? हाँ सर, कुछ में रहता है, कुछ में अगर हम प्राइवेट कंसल्टेंट कराते हैं तो वो लोग नहीं देते हैं, जबकि गवर्नमेंट की जो लैब होती है NAVL होती है वो क्लासिफाई कर लिख के देती हैं. तो जनरली हम लोग क्या गवर्नमेंट लैब से ही कराते हैं.
कि मतलब ये आपको बताया सही कौन सी टाइप की सॉइल निकल रही है कि प्राइवेट न्यू कंसल्टेंट वो नहीं दे पाते इस चीज को सर। नहीं, आप एक बार मांगेंगे तो उनको देना ही पड़ेगा, बल्कि प्राइवेट कंसल्टेंट को आज की डेट में, और दे हैव टू बी गिव, दे हैव टू बी एक्सेप्टिंग विदाउट दैट। सो बहुत लोकल लेवल पे अगर आप कर रहे हैं तो यू प्लीज डोंट डू दिस वर्क, go for IS classification only. Definitely sir. Okay, then this is the flow chart of this classification, how to understand for that. So that all details I have incorporated you to understand little bit of IS classification. What basically this is the chapter of soil. We can't go here in detail more, but the main point which should I feel emphasize to give the SBC of soil, है ना? In notes we have to be write the SBC of soil. In mostly all founding strata we decide at GAD level only. Correct? Yes sir. So where our foundation rests, because without founding strata we cannot decide ki where our foundation will rest. So open foundation we have to be decide based on our geotechnical details, and for that details we have to be take all data and calculate the SBC etc. Then only we will able to know yes at so and so level SBC designer to ensure that soil foundation pressure is less than this SBC. Correct? Yes sir. In fact, when we are checking existing structure, if we are doing work any with the existing structure or retaining some part of existing structure, that time we have to be mentioned about max pressure of existing structure on the ground. Pmax and P minimum. If we are checking, we should mention about the pressure of existing structure also. If we are retaining it, if we are constructing any bridges, then we have to be mentioned the pressure, maximum pressure of is so much, minimum pressure is so much, and it is safe for so this loadings. So this is the usually work of the design office of construction or open line. That also to be mentioned in the GAD. If you are retaining the existing structures. Clear? Yes sir. Instruction to be followed in preparation of GAD. So mainly whether proposed work is as per the sanction, first you see आपका work appear हो रहा है कि नहीं, otherwise आपने बिना estimate वगैरह पास वगैरह करा के GAD you can prepare no problem, है ना? Then आपका at least work sanction हो, approved हो, tender तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए. Now the railroad even guideline is there, without sanction you should not do the approved of the GAD should be mentioned in the tender. Whether GAD satisfied latest approved SOD. This is the most important thing. It has to be checked. All SOD provision for even if you are making new construction, then for new construction, whatever the SOD requirement is required, that is satisfied or not. Sometimes we prepare the GAD. Otherwise, if it is not satisfying the SOD, then we have to be prepare the infringement table. Then we have to be take the condonation of competent authority for the condonation from the deviation of the SOD. Who will give the condonation for the deviation from SOD? Anybody exercised for that? TCRS और टाइटल चीफ इंजीनियर सब्जेक्ट टू केस कंडीशन. कभी आपका कोई केस आप एग्जांपल दे सकते हैं, कभी जरूरत पड़ी? ऐसे बहुत से केस रहते हैं सर, बहुत सारे केस रहते हैं सर. जैसे कि सर ग्रेडियंट
ग्रेड का भी इशू आता है, कभी सर नियरेस्ट परमानेंट स्ट्रक्चर का भी इशू आता है सर उसमें सर, या नियरेस्ट यार्ड भी कुछ आ जाता है, तो इस तरह के टेक्निकल नॉर्म उसमें ऑब्लिगेटरी आ जाते हैं सर, इसी केस में आता है सर। So in fact many places आपके SOD में मेंशन किया रहता है। यस सर। तो अभी मतलब FOB वगैरह के केसेस में आए हैं कंडोनेशन, जिसमें CRS को एम्पावर किया गया है, और अदरवाइज आपको पूरा कंडोनेशन, इवन ब्रिज के कंडोनेशन में कई बार अगर आपका फ्री बोर्ड और क्लियरेंस का प्रॉब्लम आया, देन यू हैव टू गो टू द रेलवे बोर्ड। यस सर। Correct. So that will, so usually we should not deviate from our SOD. Correct. So relevant and up to date IRS IRC code followed with their code and preference to be written. यस सर। जो up to date जिस डेट में आप GAD बना रहे हैं, उस डेट में उसका प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। आपने कौन सा लगा रहे हैं, जैसे सपोज करो आज की डेट में आप ब्रिज बना रहे हैं, तो आपके सारे ब्रिजेस को एटलीस्ट 25 टन के लिए फिट होना चाहिए, है ना। और फीडर रूट अगर है तो किसके लिए बनाना है? फीडर रूट में नए ब्रिज आपको लोडिंग के लिए बनाना है, बट एग्जिस्टिंग ब्रिजेस है तो उसका हमारा फिट करना है। Whether L section is approved by open line. What is the relation between L section and bridge GAD? Is any relation? Yes sir, definitely sir. Which should be prepared first, L section or GAD? L section then GAD sir. L section first. Any other? आपका bridge is a obligatory point, you know? Sir. Bridge is a obligatory point. Based on that, we decide the our formation level. Sir. Bridge level plus our vertical clearance, HFL, vertical clearance, bottom of the girder, then our formation level, then rail level. So bridge is the obligatory point. Based on that, we decide our gradient, etc. So how you can prepare L section without finalizing the bridge GAD? सर FLS के अंदर हम लोग जनरली क्या है, मेजर ब्रिज का इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं सर, टाइप ऑफ फाउंडेशन वगैरह को लेकर के, और उसके बेस में ही हम लोग L सेक्शन प्रिपेयर करते हैं सर। पहले डिसाइड हमारा ये साइड डिसाइड हो जाती है सर, मेजर ब्रिज के लिए जो ब्रिज आ रहे होते हैं सर, उनको बेस करते हुए L सेक्शन तैयार करते हैं सर। वेरी करेक्ट। सो सबसे पहले हमें मतलब ब्रिज का डिटेल तैयार करना होता है। बेसिकली बोथ आर कोरिलेटेड, लाइक जो है ना अपना मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, दोनों पहले सर। इट इज द सेम, एक दूसरे से कोरिलेट है। कोई भी काम दोनों पे एक साथ करना पड़ेगा। इधर हमारा एल सेक्शन डिसाइड करने पे हमारा पहले ब्रिज का हमें फाइनल लेवल निकालना पड़ेगा, उसके बेस पे हमें एल सेक्शन, मतलब दिस इज ए जस्ट ऑब्लिगेटरी पॉइंट, उसके ऊपर जाना है, उससे नीचे नहीं आना है ना, so that we will get minimum vertical clearance etc and minimum freeboard. So you are right that after the finalizing of L section we plan the GAD, but before that we have to be finalize the bridge details also. Yes sir. So that either in tabular form at least. Correct? Yes sir. Whether hydrological investigation has been carried out, a report to be submitted, if not, the reason thereof. Hydrological investigation, जो हम आपसे इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं, that is called hydrological investigation. Yes sir. That has to be mentioned in the all bridge GADs. Even if you are not doing, even then you have to be mentioned. अगर जैसे ओपन लाइन का है, तो उसमें हाइड्रोलॉजिकल डिटेल जितना भी है वो हम कैसे देते हैं, विद द हेल्प ऑफ अवर ब्रिज रजिस्टर। ब्रिज रजिस्टर में डाटा रहते हैं और दैट वी फिल ऑल द डाटा फ्रॉम द ब्रिज रजिस्टर। सुपरस्ट्रक्चर व्हाटएवर we are normally provided, we provided standard drawings, RDSO
स्टैंड ड्राइंग इज फॉलोड इफ सो वेदर ऑल डायमेंशन आर एज पर द आरडीएसओ, है ना. अगर नहीं है, इफ नॉट अप्रूव्ड फ्रॉम पीसी और सीओ ऑब्टेन्ड विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन. व्हाई यू आर डेविएटिंग, यू हैव टू बी राइट द जस्टिफिकेशन एंड अप्रूवल फ्रॉम पीसी और सीओ टू बी टेकन. दिस इज मेंशन्ड इन दिस अवर this way. Why you are deviating your standard drawing for superstructure. For selecting the type of superstructure, whether railway board's guidelines followed or not, the railway board's approval has been taken. 28/5/2009 की गाइडलाइन है जिसमें ले दिया है कि 24 मीटर से आपके बड़े स्ट्रक्चर्स को पीएससी में नहीं बनाना है. यस सर, है ना. स्टील गर्डर में ही हमें कराना है और ये हमारे स्टील गर्डर वगैरह जो है जो आरडीएसओ के टाइम पे यूज करना है. सिलेक्शन ऑफ स्पैन, वेदर मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन हैज बीन कंसीडर्ड, प्रॉपर एंड एडिक्वेट जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्पैन टू बी मेंशन. कंस्ट्रक्शन में आप लोग मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शंस का एक्सरसाइज करते हैं क्या? होता है सर. कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन, कॉस्ट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर स्पैन होता है सर. आपके यहाँ कौन सा स्पैन मोस्टली मोस्ट इकोनॉमिकल आता है? ये सर, कौन सा स्पैन मोस्ट इकोनॉमिकल आता है अधिकतर जनरली सर 18 मीटर का आता है सर. वेरी करेक्ट. किन्होंने बोला? अजय जी. अजय कुमार. यस यस यस, यू हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड. थैंक्स सर. वेरी गुड एक्सपीरियंस. I have also did the many type of this economical exercise, and I found that 18 meter span is the most suited economical span. उसमें हमारा सुपरस्ट्रक्चर का वेट भी उतना नहीं होता है. यस सर. और फाउंडेशन भी हमारे, अगर हम नॉर्मली पाइल फाउंडेशन तक भी जा रहे हैं तो भी हमारा अगर मतलब पाइल बहुत ज्यादा डीप जा रही है then it may be uneconomical. Otherwise नॉर्मली 20 मीटर तक की पाइल भी है तो भी इकोनॉमिकल आ जाता है. तो कर लेती सर. करेक्ट. उससे ज्यादा अगर डीपर है देन दैट मे बी चेंज. यस, द 18 मीटर इज यूजुअली, दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि बड़े स्पैन इवन मेजर ब्रिज के इंपॉर्टेंट ब्रिजेस भी 18 मीटर के आपको रेलवे में मिलेंगे. यस सर. मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ब्रिजेस भी रेलवे 18 मीटर पे जा रही है. वेस्टर्न रेलवे में हमारा एक कुछ 64 स्पैन ऑफ 18 मीटर है. Because the 18 meter is the most economical span. Sir, I think चंबल का भी सर न्यू ब्रिज इसी तरह का है सर. कौन सा? चंबल नदी का थर्ड गंगा जो सर ब्रिज है सर, शायद आई थिंक इसी तरह कुछ है. 18 या 24 ऐसा कुछ समथिंग. चंबल तो 30 मीटर वाला है. एक तो जो सर नया जो बन रहा सर, आई डोंट नो. चंबल अभी दिस इज पासिंग थ्रू आगरा एंड मोरेना. अच्छा, वो उस प्रोजेक्ट का मुझे नहीं मालूम. सर वहाँ पे जो बना रहा है हो सकता है दैट मे बी. तो यस, आई एग्रीड विद कि अगर हमारा फाउंडेशन हमारा ओपन फाउंडेशन या फिर ज़्यादा डीप नहीं है या कैसन की जरूरत नहीं पड़ रही है देन 18 मीटर इज मोस्ट. अगर आपको वेल फाउंडेशन करना है तो 18 मीटर अनइकोनॉमिकल हो सकता है. देन वी शुड गो फॉर हायर स्पैन. ओपन फाउंडेशन अगर आप कर रहे हैं and some pile foundation up to 20 meter, then this span will be economical. So whether overall length is more than existing bridges, water course, if so the reason for that, कि आपने ज्यादा क्यों रखा, और whether overall length is less than existing bridge of water course, so that you have to be right the reason of that. So normally जो what is the water course, हमें उतना ब्रिज तो बनाना ही चाहिए. उससे कम कब करते हैं, ज्यादा कब करते हैं? एनीबडी कैन एक्सप्लेन? वाटर कोर्स से हम अबार्टमेंट कई बार अंदर ले लेते हैं और कई बार हम बाहर भी लेते हैं. तो क्या रीजन होता है? कम लेने का कभी रीजन ये हो जाता है कि हम आगे और बढ़ नहीं सकते. सपोज हमारा यार्ड क्या कोई टाउन. हेलो, कम करने का रीजन? आपका म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही.
सर एक्चुअली कम करने का रीजन ये होता है कि हमारा जो ब्रिज हम फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते कि वहाँ हमारा यार्ड या जैसे कि हमारे टाउन या किसी कोई इंपोर्टेंट बिल्डिंग आ जा रही है और हमको बढ़ाना इसलिए पड़ता है कि हमारा किसी सेक्शन के अंदर में डेप्थ इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो हमारा स्कवरिंग का या हमारे ब्रिज फाउंडेशन कटने का या हमारा जो है वहाँ ये वाटर से संबंध ज्यादा होती है तो हमको लंबाई करनी पड़ जाती है सर, सब्जेक्ट टू साइट कंडीशन। काफी कुछ अच्छे से आपने सही बताया कि कई बार क्या होता है कि हमारा अगर पैरेलल स्ट्रीम आ गई या दूसरी किनार से कोई स्ट्रीम आ गई है या साइड पे सडनली वाइडन हो रहा है तो हमें कई बार वाटर स्ट्रीम से या आगे जाके हमारा वाटर कट के चांसेस हैं तो हमारा पिचिंग या रिपेयर पॉसिबल नहीं है तो हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। कम करने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम प्रोटेक्शन वर्क कर रहे हैं लाइक जो बड़ी बड़ी रिवर है ब्रह्मपुत्रा वगैरह पे जो हम ब्रिज वहाँ पे 9 किलोमीटर लंबे हमारे रिवर का स्पैन तो 9 किलोमीटर लंबा हमें ब्रिज बनाना सपोज करो मुश्किल है, हमें 4 किलोमीटर ही बना रहे हैं अगर रिड्यूस करते हैं तो फिर हम वहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क वगैरह या फिर हमारा तो दैट फॉर मालूम है कि वहाँ तक नहीं जा रहा है और हम गाइड बंड वगैरह जो बनाते हैं लाइक सर बोगीबिल या लाइक बोगीबिल तो हमने आधे में हम गाइड बंड वगैरह बनाते हैं 50% में हम रिड्यूस कर सकते हैं एंड वी राइट द रीजन। नॉर्मली जितने भी हमारे मैदानी क्षेत्र की रिवर्स हैं उस सब में हमें रिड्यूस करना पड़ता है बिकॉज देयर लेंथ इज वेरी वाइड एंड दे चेंज द कोर्स मेंडरिंग ड्यू टू मेंडरिंग दे चेंज द कोर्स सो एट प्रेजेंट दिस इज द कोर्स बेसिकली गाइड बंड इज द गाइडिंग फॉर देयर मेंडरिंग नॉट देयर द फ्लो so that they will not meander further, they will pass it within that limit. So normally river width is not so much, in the many years they change their path due to the meandering, that's why we have to be considered within that limit, correct? So whether the design discharge has been calculated है ना, रेट रॉ आप लोग जानते होंगे रेलवे अफेक्टिंग वर्क एंड रेलवे अफेक्टिंग टैंक है ना, उनका वैल्यू उसमें कहाँ पे है उनका डिटेल्स है ना that we have to be mentioned and we have to be considered and even अभी ब्रिज के ऊपर भी हम प्लेक लगाते हैं कि रेलवे अफेक्टिंग टैंक और रेलवे अफेक्टिंग वर्क इज सो मच किलोमीटर इतना डायरेक्शन that already we have given substructure we have mentioned whether freeboard and vertical clearance has been provided as per the code or एनी कंडोनेशन सीबी लेवल का या सीओ लेवल का जो कंडोनेशन है वो लेके किया है दैट हैज टू बी मेंशन्ड सीबी देन वी हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ दैट अथॉरिटी whether proposed waterway has been provided as per code and the waterway decided already आप लोगों को बता ही दिया है maximum discovered depth from the HFL है ना then size of pier and abutment. I want to ask from all class, what is the discovered depth? There is fundamental question. Sir, there is the eroded bed of the river. जब नदी बहती है सर तो उसका जो वो पानी से उसका बेड का कटाव होता है सर। तो that is because so they make the depth of the foundation. So that is the discovering, sir. Why it is covered? Basically, due to if the flowing water of the river is more than critical velocity, then it will cut the bed of the river. Okay. So what is critical velocity? क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसपे नदी के अंदर ना तो सिल्टिंग होती है ना उसमें उसे एरोजन कटिंग होती है सर। Yeah. Because of that velocity, जो उसके particles हैं, they being blown out. Yes, sir. They will come and flow. They will not. They will feel their weightlessness. Their weight will be reduced. So the particle size and particle weight is important of the river for their discover. Correct, yes, sir. So yes, sir. Very correct you have told. So for that, normally our code gives the Manning's formula of our perimeter width. Discover depth का पूरा formula. Can you tell discover depth? Discover is a level up to which it is discovered. What is the discovered depth? Depth will be measured from which level? From maximum discharge. No. Level depth means एक x से y तक का होगा ना, नीचे तो जहां तक डिस्कवर हो गया नीचे लेवल, टॉप लेवल फ्रॉम बेड लेवल
or rail level from HFL. Sir, water level for discharge. From HFL. What? Discharge Water level. level for discharge. what is it called? Design What discharge. that level is called? It's for from design discharge. ये देखिए, ये तो हमारा स्कवर लेवल है, ठीक है, और एक ये हमारा बेड लेवल है, फिर ये हमारा वाटर लेवल है, इसको बोलते हैं HFL, जो आप बोल रहे हैं ना, हाईएस्ट फ्लड लेवल। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए जो लेवल है उसको DHFL बोलते हैं, डिजाइन फ्लड लेवल। देन ये हमारा बॉटम ऑफ द गर्डर बॉटम, ठीक है, बॉटम ऑफ द गर्डर, देन फॉर्मेशन लेवल, देन रेल लेवल। तो मैं किसको मानूं? स्कवर डेप्थ किसको मानूं? यहाँ से बेड लेवल से सर, बेड HFL से लेवल मानूं, या HFL तक जाऊं, या बॉटम ऑफ गर्डर तक जाऊं, या फॉर्मेशन लेवल तक जाऊं? कहाँ तक जाऊं? बेड लेवल HFL था सर। बेड लेवल सर, HFL सर। बेड लेवल कौन बोल रहा है? HFL. Who is saying bed level? सर बी अराउंड। और HFL किसने बोला? सर HFL मैंने सीनियर टू आगरा सर। Okay, very correct. HFL is the correct. Because मैं हर क्लास में ये पूछता हूँ, मैक्सिमम लोग इसमें बड़े कंफ्यूज्ड हैं. So these all are wrong. Discover depth will be calculated from HFL to discover level. और आपको ऑलरेडी क्लास में बताया था कि discover level भी फर्दर हम फाउंडेशन वगैरह के लिए एक्स्ट्रा और हम क्लियरेंस और लेते हैं 2D, 1.25D एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो और उसके बाद में फिक्सिटी लेंथ एक्सेट्रा वगैरह लेते हैं. बट फ्रॉम HFL से हमें लेना है, ये हमेशा ध्यान. मैंने इतनी एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए कराई आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चन करें कि आप फ्यूचर में कभी भी ना बोलें कि डिस्कवर डेप्थ विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम HFL. क्लास में नॉर्मली मैं पूछता हूं तो मोर देन 80% लोग बाग बेड लेवल का नाम लेते हैं. So please, this is not a bed level. This is the HFL to the discover level. Okay. So next is the हमारा size of pier and abutment as per the जो हमारे कोड के है इंस्पेक्शन अरेंजमेंट वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं. फाउंडेशन के लिए सेफ बियरिंग कैपेसिटी है ना, ओपन फाउंडेशन के लिए पाइल फाउंडेशन, बेल फाउंडेशन, डिस्टेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड ब्रिजेस है ना, these all has to be checks to be taken of our details as per the circular and instructions. Then GAD में half plan and half top and half bottom plan, sectional plan, elevation and key plan, इतने प्लान होना चाहिए जो मैंने बताया. Whether the dimension of plan, elevation, cross section, longitudinal section are matching, wing wall and cross section with the dotted lines of elevation है ना. देन बैकफिल मटेरियल का जो हमारा स्पेसिफिकेशन दिया है सब स्ट्रक्चर कोड में, उसके हिसाब से है कि नहीं, वी पोल दिखाए हैं कि नहीं है, कर्टेन वॉल, ड्रॉप वॉल हमारा इन केस ऑफ बॉक्स वगैरह में हमारे बनाए कि नहीं बनाए है ना. बियरिंग फैसिलिटीज ऑफ इंस्पेक्शन, ट्रॉली रिफ्यूज, मैन रिफ्यूज एंड रेफरेंस ऑफ रेफरेंस ड्राइंग्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एक्सेट्रा, दिस हैज टू बी mention of that.